Hello all. एनिमेटर का उपयोग Welcome to this tutorial on how to animate a human character in Unity 3D using Animator. To animate a human character, we first need a FBX or OBJ file containing the human mesh and the animation. To get a rigged character having bones and its animation, you can use Mixamo. For knowing how to get a rigged character with animations, please refer to my tutorials with links in description below. Let's have a look at the components of an FBX file when imported into Unity. To import this file, go to Assets, then Import New Asset, and navigate to the path of file, then Import. In my case, file is already imported. On expanding the file, we can see it consists of mesh components which give the physical shape to the character. Then there is armature, which consists of all the bones that make up the human body. It is these bones that the animation is applied to, which moves the mesh and give animation to the human character. Then there are materials which give the color and texture to human mesh components. Lastly, there are animation clips represented by the triangle in blue which define and store the different animations on the character. Like for a human character, there can be animations like walk, run, dance, etc. So, for each of these animations, there will be separate animation clips which make up the component of the FBX file. Now the first step that you follow in animating the character is to define some properties to this file to different components. If we click on the root FBX file, we can see that in the inspector there are 4 tabs: Model, Rig, Animation, and Materials. For each of these tabs, we need to set the parameters of the human character that we wish to animate. We leave the Model tab to its default value as we are okay with values which are already set. Coming to Rig tab, here we define the rig properties. Rigging is a technique used in skeletal animation for representing a 3D character model using a series of interconnected digital bones. We set the animation type to Humanoid as our character is human. In the avatar definition, choose Create from this model. Avatar acts as a template for other animations on the same human character. Let us understand it this way. Say there is a human character that needs idle, walk and dance animations. So we need 3 FBX files, or OBJ files, for that matter. We do not import the human mesh as a component for all these 3 FBX files, as the human mesh is common to each of these files. We will just have one base FBX file having the mesh component, which will be shown to user in the game and shared by other 2 files. The base model acts as the template or avatar which will be used by other 2 animations in this case. So, for this particular file, in Rig tab, we set the animation type to Humanoid. Avatar definition as Create from this model. Rest of the settings are left to their default values, and then we apply these changed settings. Coming to Animation tab, under Clips section we see all the animations. Choose the one that you need which will be used for the file. Check loop time depending on whether you want the animation to be played once or loop when this particular animation is applied to the character. Rest of the settings can be left to default as they are not used in most of the cases. In the Materials tab, if your materials do not show up in Remapped Materials, then under Location, select Use Embedded Materials. जब हम चरित्र को प्रोजेक्ट व्यू से हायरार्की व्यू में खींचकर त्वरित करते हैं तो हम उस पर लागू सभी मटेरियल्स और टेक्सचर्स को देख सकते हैं। इस बिंदु पर हमने आधार फाइल की स्थापना पूरी कर ली है। हम अन्य 2 फाइलों के लिए प्रक्रिया को दोहराते हैं। सिवाय इसके कि रिग टैब में हम अवतार डेफिनेशन को अन्य अवतार से कॉपी के रूप में चुनते हैं और पहले बनाई गई आधार फाइल के अवतार को असाइन करते हैं। आइए हम इस पर और अधिक निर्माण करें। इस तात्कालिक चरित्र के लिए हमें इसे एनिमेट करने के लिए एक एनिमेटर कंपोनेंट To this instantiated character, we need to add an animator component to animate it. So, we go to Add Component and search for Animator and add the animator. The animator component is used to assign animation to our character. The animator component requires a reference to an animator controller which defines which animation clips to use, and controls when and how to blend and transition between them.
To create an Animator controller, right-click in एनिमेटर Project कंट्रोलर View बनाने के and लिए select प्रोजेक्ट व्यू में Animator राइट क्लिक controller. करें और एनिमेटर कंट्रोलर We चुनें। name it as character हम and इसे assign कैरेक्टर it का to नाम देते हैं Animator और इसे controller. एनिमेटर कंट्रोलर को असाइन Since करते the हैं। game object is a चूंकि humanoid गेम character ऑब्जेक्ट with एक an अवतार avatar डेफिनेशन के definition, साथ एक the मानवीय avatar चरित्र should है, also इस be कंपोनेंट assigned में in अवतार this को भी निर्दिष्ट component. किया जाना चाहिए। Select चयन whether करें to कि चरित्र control की the लोकेशन character's और रोटेशन position को and एनिमेशन से rotation या from the स्क्रिप्ट से नियंत्रित animation करना है या itself नहीं। or from script. अपडेट मोड आपको यह The चुनने की update mode अनुमति देता allows है you to कि select एनिमेटर when the कब अपडेट animator करे और updates उसे and किस समय which सीमा का timescale उपयोग it should करना चाहिए। use. सामान्य In मोड में normal mode, एनिमेटर the को अपडेट animator कॉल is के साथ updated साथ in अपडेट sync किया with the जाता है update और call, एनिमेटर and की the गति वर्तमान animator's टाइम speed स्केल से मेल matches the खाती है। current timescale. यदि टाइम स्केल धीमा If हो the जाता है timescale तो is slowed, एनिमेशन मिलान करने के animations लिए will धीमा slow हो down जाएगा। to match. एनिमेट फिजिक्स मोड में In एनिमेटर को Animate फिक्स्ड अपडेट physics कॉल के mode, the साथ सिंक में animator is अपडेट किया updated जाता in है sync जो with the फिजिक्स fixed सिस्टम के update साथ call लॉकस्टेप that में is है। in lockstep with the आपको physics इस मोड system. का उपयोग करना चाहिए You यदि should आप use this वस्तुओं की mode गति if को you are भौतिक विज्ञान animating की the motion इंटरैक्शन of के साथ objects with एनिमेट कर रहे physics हैं, जैसे interactions, कि such कैरेक्टर्स as जो रिजिड बॉडी characters को which धक्का can दे push सकते हैं। rigid body. अनस्केल्ड टाइम In में एनिमेटर unscaled को time, the अपडेट कॉल के animator साथ is सिंक में updated in अपडेट sync किया with जाता the है, update लेकिन call, एनिमेटर but की the गति animator's वर्तमान टाइम speed स्केल को ignores the अनदेखा करती current है timescale और and 100% animates at गति पर एनिमेट करती 100% है। speed regardless. विशेष प्रभावों के This लिए is या गेम useful प्ले for को रोकने के animating a लिए GUI संशोधित system समयमानों at का normal उपयोग करते speed समय while यह using सामान्य गति modified पर जीवन timescales for प्रणाली को special एनिमेट करने effects के or लिए to pause उपयोगी है। gameplay. कलिंग मोड आप Culling एनिमेशन mode के you लिए can चुन choose सकते for हैं ताकि animations यह to नियंत्रित control किया जा what is सके कि updated ऑब्जेक्ट को when the हटाए जाने object पर is क्या culled. अपडेट किया जाता है। Always animate. हमेशा Don't एनिमेट do करें, culling ऑफ even स्क्रीन when होने पर भी off-screen. कलिंग न करें। In कल Cull अपडेट update ट्रांसफॉर्म्स transforms, टारगेट में retarget, रेंडर्स IK, दिखाई and नहीं देने write-up पर एक और transforms are ट्रांसफॉर्म्स के disabled लेखन when को अक्षम कर renderers दिया are जाता not है। visible. कल में पूरी In तरह Cull, से एनिमेशन completely पूरी तरह से animation is अक्षम है completely जब रेंडर्स disabled दिखाई when नहीं दे रहे हैं। renderers are not visible. आइए अब देखें कि Let जब us हम now इसे have a खोलते look हैं at how तो एनिमेटर Animator कैसा looks दिखता है। like when we open it. जैसा कि पहले As बताया गया है, explained earlier, एनिमेटर कंट्रोलर Animator परिभाषित controller करता है defines कि which कौन सी animation एनिमेशन क्लिप clips का to उपयोग use करना है and और controls कब और when and कैसे how to उनके blend बीच and मिश्रण और transition संक्रमण को between them. नियंत्रित करता है। एनिमेटर The कंट्रोलर के Animator पास इसके controller has भीतर उपयोग की references to जाने the वाली animation एनिमेशन क्लिप clips का used संदर्भ within होता it है and और एक manages स्टेट the मशीन का various उपयोग करके animation विभिन्न clips and the एनिमेशन क्लिप और transitions उनके बीच between के them संक्रमण using का a state प्रबंधन करता machine, है which जिसे could be thought एनिमेशन of as क्लिप a और flowchart ट्रांजिशन of के फ्लोचार्ट animation के रूप clips में and माना जा सकता है। transitions. हम We अपने will learn भविष्य के more about ट्यूटोरियल में Animator एनिमेटर controller कंट्रोलर के in my बारे में future अधिक जानेंगे, tutorial, लेकिन but to give an एनिमेटर कैसे idea काम how करता है Animator इसका works, we will अंदाजा take a लगाने के simple लिए हम case of सिंगल playing डिफॉल्ट single एनिमेशन चलाने default का एक animation. साधारण मामला लेंगे। If we अगर हम expand the एनिमेशन animation फाइल का file, विस्तार we can करते हैं drag तो drop हम and place एनिमेशन the क्लिप को animation एनिमेटर के clip अंदर inside ड्रैग the ड्रॉप और रख animator. सकते हैं। This is यह the entry एनिमेशन की state of प्रवेश स्थिति है animation, which जो is the डिफॉल्ट default एनिमेशन स्थिति है। animation state. यह एक निष्क्रिय This श्वास is an एनिमेशन idle है जो breathing गेम शुरू होने animation, पर which is स्वचालित रूप से खेला automatically जाता है। played when the game is started. आइए इसे खेलते हैं और Let's देखते play हैं it and कि see क्या if हमारा our चरित्र character शुरुआत में breathes आइडल idly ब्रीदिंग on लेता है। start. हम We can एनिमेशन see को the खेलते हुए animation देख सकते playing हैं। out. मेरे In my भविष्य के future ट्यूटोरियल में हम tutorials, we will सीखेंगे कि learn how कैसे we हम can ट्रांजिशन और transition सिर्फ from one ट्रांजिशन गुणों का animation उपयोग state करके to other एक using एनिमेशन स्टेट से transitions दूसरे में and set ट्रांजिशन कर सकते transition हैं। properties. अधिक मजेदार वीडियो के Subscribe, लिए मेरे like, चैनल को comment, and सब्सक्राइब, share my लाइक, channel कमेंट for और more शेयर fun करें और videos, अधिक के and लिए stay बने रहें। tuned for more. देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.